So the Indian security forces killed the 3 masterminds behind the brutal Pahalgam Massacre, which claimed the lives of 26 innocent civilians on April 22, 2025. Now, the attackers, identified as Suleiman Shah, Abu Hamza and Yaseer Gibran, were Pakistani nationals and senior Lashkar-e-Tayyaba operatives. Now, let's try and show you more proof how Pakistan was behind Pahalgam attack. And this is important because there have been questions that have been raised as to whether they were homegrown terrorists or they were Pakistani terrorists. Well, there is some more proof. As Home Minister had also said in the parliament, they had proofs. Firstly, Pakistani government documents were found. What kind of documents? They found voter slips which were in the pockets of the slain terrorists. Now, this is huge. That establishes that they were voters, therefore citizens of Pakistan. Pakistan NADRA biometric records were found on their satellite phones. Now, these are digital signatures, digital footprints that were found on their technical equipment. This is important to note. What else was found? Let's try and take a look. There were some chocolates that were found, Candyland chocolates. These are Pakistani manufactured chocolates and they bear the imprint of the country they were produced in and therefore link the terrorists to that country. Now, let's try and understand what else. We try to understand the entry route inside Kashmir. Where did they come from? Well, they came to India on May 2022. They've been there for a long time. They've been waiting for an opportunity. And before they targeted the terrorists, targeted the innocents, they also conducted another attack. They had crossed the LOC near the Gurez sector. This is in North Kashmir. That is where they had passed through the border and entered India. Now, let's try and understand what kind of stuff or ammunition or technical stuff that were found with them. This has come to us through forensic and technical confirmation. There were 762x39mm casings. This is a type of particular ammunition casing that we are talking about that matched, mind you, as the Home Minister said, with what was found in Bysseren. So this was sent all the way to Chandigarh. There were FSL scientists over there who saw them, who fired them, who checked them and then matched them. What apart from that? Now, this is a big proof. Blood on a torn shirt found in Pahalgam matched with terrorist DNA. Now, DNA has been established at Bysseren, at Pahalgam, of the slain terrorists. That proves that they were there at the location. This is huge proof. Now, joining us now for more on this is Manjeet Negi. Manjeet, we'll try and speak to him and try and find out what happened. Manjeet, this list of proofs that we've just seen, you know, there is technical and forensic evidence. There is evidence like the chocolate wrappers. There is evidence of documents of Pakistan, and big evidence is the DNA matching from Bysseren to the terrorist. Very important. Well, Anjali, security forces has prepared a detailed dossier on the 3 TRF terrorists who was responsible for the Pahalgam attack. And as per the report, recovery of Pakistani ID cards, voter ID card based on Karachi-based chocolates, and as per the digital footprint, including these voter ID card and other, and most importantly, the Chinese satellite phone highway found and the used by the terrorist on the between the 22nd April to 25th July, and also the sequence, the whole sequence of the incident, especially the two voter the election commission voter ID card Pakistan were found in the pocket of Suleiman Shah, who was the mastermind of the this attack, and the voter serial number and photograph on the on these voter ID card Lahore NA 125 Gujranwala, Pakistan, and the whole and other things. The security forces the entry and the timeline of these terrorists, including May 2022, they crossed LOC near Gurez sector, and then
April 21st to 2050, they moved to the seasonal hut called Dhok at Hill Park in 2 kilometers from Bysseren Valley. And after that, after April 22nd, again they and most of the time they move one place to other place during the night. राइट मंजीत, दीज आर डेफिनेटली कंपेलिंग एविडेंसेस, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा एविडेंस है उसको पूरी तरह से पुख्ता बताने के लिए, ठोस बताने के लिए सरकार ने कई जांच भी की थी और ये जांच के बारे में गृह मंत्री ने संसद में भी बताया था। तो कैसे ये सबूत जो मिले हैं ये पुख्ता साबित होते हैं? देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री ने संसद के दौरान भी कहा कि इस पूरे अगर आतंकी हमले को देखें, क्योंकि इस बात को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि आतंकियों जो 3 से 4 आतंकी इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं वो कहाँ गायब हो गए। और उसमें सरकार की तरफ से जो पूरा सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें न सिर्फ आतंकियों से मिले हथियार हैं, डिजिटल फुटप्रिंट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इन सारी चीजों को ट्रैक किया गया, इनको मिलान किया गया। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में इस बात को कहा कि फॉरेंसिक्स जो लैब है चंडीगढ़ में, उसने चाहे AK-47 से चले हुए गोलियां हों, दूसरी चीजें उनको मिलान किया, उनसे आतंकियों के जो DNA सैंपल हैं उनका मिलान किया गया। तो सारी चीजें, और इस वक्त क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे सीक्वेंस को लेकर बहुत मोटी मोटी चीजें संसद में सांसदों को बताई थी, लेकिन इस वक्त जो इंडिया टुडे के पास, हमारे पास जो डिटेल डोजियर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया है उसमें पूरी जानकारी उनके पास, चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट हो, उसके अलावा जो फिजिकल एविडेंस हो, उन सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है। Absolutely. So, as Manjeet is telling us, all this evidence has been gathered. It's been a systematic approach that Indian government had taken. They gathered all this evidence and then decided whether to put it in front of the media or not, and they've taken their time in coming out with this report. Manjeet, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये ऑपरेशन महादेव जिसके जरिए इन आतंकियों को ढेर किया गया था वो एक लंबे समय तक चला था, और जब वो पूर्ण भी हो गया था उसके बाद भी कौन इसमें मरा है, किस किस को न्यूट्रलाइज किया गया, उसमें वक्त लिया था सरकार ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसके पीछे क्या वजह थी? वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे इन सारे सबूतों को सामने रखने से पहले? देखिए, क्योंकि 290 दिन से ज्यादा वक्त अगर आप देखें इस घटना पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो गए थे, ऐसे में सरकार पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, सेना पर इस बात के लिए सवाल उठाए जा रहे थे कि ये आतंकी कहाँ गायब हो गए हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सेना तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है, तो 3 आतंकी किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद जब ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग भी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संसद में हो रही थी, उस दौरान ही ऑपरेशन महादेव भी पूरा हुआ, जिसमें 3 आतंकी, जिसमें सुलेमान शाह, अबू हमजा, यासिर, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का जो नया चेहरा TRF है, उसके तहत इन्होंने पाकिस्तानी सेना के निर्देश में काम किया। और इसीलिए सरकार की भी कोशिश थी कि इस पूरे मामले में कोई कोताही न रहे, जिसको लेकर बाद में सवाल उठाए जाएं, क्योंकि ये आतंकी सीधे पाकिस्तानी सेना से इनको निर्देश मिल रहे थे। हो सकता था कि अगर किसी गलत आतंकी की पहचान दी जाती पाकिस्तान की तरफ से, उनकी एजेंसियों की तरफ से क्लेम किया जाता कि वो आतंकी नहीं है। तो इसीलिए सारी चाहे जो टेक्निकल सबूत इनके खिलाफ रहे हों, डिजिटल फुटप्रिंट रहे हों, हथियार रहे हों, इनसे मिले जो सामान हैं, चॉकलेट हैं, इनके खाने पीने का सामान है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चाइनीज सैटेलाइट फोन इनसे मिला है उसका नंबर यहाँ पर मौजूद है। और उसके 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में 4 किलोमीटर के अंदर इस चाइनीज फोन का जो कम्युनिकेशन हुआ है वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रहा है इस पूरी घटना में, और इसीलिए उसकी जानकारी भी दी गई है। शुक्रिया मंजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट हैज कम। दिस रिपोर्ट एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट दीज आर द वेरी टेररिस्ट हु वर इन्वॉल्व्ड इन द पहलगाम टेरर अटैक एंड दे आर पाकिस्तानीज।